Hello, welcome to the Ncert textbook series, class 7th. So let's start this chapter number 6, Human Environment Interactions, the tropical and the subtropical region. Other chapters are uploaded previously, so you can check out. Renuka was excited. Srikant uncle was home after a gap of nearly 4 months. He was a wildlife photographer and traveled widely. Renuka's interest in wildlife and forests began at an early age. When her uncle introduced her to books on nature, pictures of distant lands and people who lived there always fascinated her. तो ये स्टोरीज है तो हम इसे स्किप करेंगे. लाइफ इन द अमेजन बेसिन. डू यू नो? पहले देख लेते हैं. When Spanish explorers discovered the Amazon River, they were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts. These people reminded them of the fierce tribes of women warriors known in ancient Roman Empire as the Amazons. Hence the name Amazon. तो नाम कैसे आया अमेजन रेन फॉरेस्ट का, तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द अमेजन रिवर. किसने डिस्कवर्ड किया था? स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने किया था ये सारी चीज़ें डिस्कवर. बट अमेजन रिवर का नाम कैसे आया फिर देन वो तो नहीं पता. तो अमेजन रिवर को जब इन्होंने डिस्कवर किया था तो दे आर अटैक्ड बाय ए ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स वेयरिंग हेड गियर्स एंड ग्रास कार्ड्स. दीज पीपल रिमाइंडेड देम ऑफ द फियर्स ट्राइब्स ऑफ वोमेन वॉरियर्स नोन इन एंशिएंट रोमन एम्पायर एज द अमेजॉन्स. ओके, तो अमेजॉन्स नाम की एक फियर्स वोमेन ट्राइब था किस कहाँ पर? रोमन एम्पायर में. तो वहाँ से नाम पड़ा है अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रिवर इसका नाम आया है. देन लाइफ इन द अमेजन बेसिन. सो बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन लेट अस लुक एट द मैप. Notice that the tropical region lies very close to the equator, definitely, between 10 degree north and 10 degree south. We call it tropical region. It is referred to as equatorial region. The river Amazon flows through this region. Notice how it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. So first Amazon river flows to the west, okay, in the west, and then the river Amazon flows through this region. Notice how it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. The place where a river flows into another body of water is called the river's mouth. Numerous tributaries join the Amazon river to form the Amazon basin. The river basin drains portions of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia and small part of Venezuela. तो ये भी इम्पोर्टेंट होती है कि कौन कौन सी कंट्रीज है जो जिसमें अमेजन बेसिन जो है पड़ता है. तो वो आपको हो गया डेफिनेटली जो है ब्राज़ील पहला होगा, देन पेरू, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला. ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, इक्वेडर, वेनेजुएला. ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वेडर एंड वेनेजुएला. नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू व्हिच द इक्वेटर पासेस. ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंट्री है जिसके ऊपर वो 0 डिग्री क्रॉस कर रहा है. देन ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं? दीज आर स्मॉल रिवर्स that join the main river. The main river along with all its tributaries that drain an area forms the river basin or the catchment area. The Amazon basin is the largest river basin in the world. So ये ध्यान रखना कि the Amazon basin is the largest river basin in the world. अब क्लाइमेट जो है एज यू नाउ नो द अमेजन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड. द स्किन फील्स स्टिकी. इट रेन्स ऑलमोst every day, that too without much warning. The day temperatures are high with very high humidity. At night the temperature goes down but humidity remains high. Rainforest, as it rains heavily in this region, thick forests grow. The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground.
The ground remains dark and damp. Only shade-tolerant vegetation may grow here. Orchids, bromeliads grow as plant parasites. The rainforest is rich in fauna. Birds such as toucans, यहाँ पर देख सकते हो इमेजेस है, हमिंग बर्ड्स, macaw with their brilliantly colored plumage, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. These birds also make loud sounds in the forest. Animals like monkeys, sloth, and ant-eating tapirs are found here. Various species of reptiles and snakes also thrive in the jungles. Crocodile, snakes, pythons abound. Anaconda and boa constrictor are some of the species. Besides, the basin is home to thousands of species of insects. Several species of fishes, including the flesh-eating piranha fish, is also found in the river. This basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found there, right? So several species of fishes, including the fish-eating piranha fish, मतलब ये जो piranha fish है वो fish को ही खा जाते हैं, is also found in the river, Amazon river में. This basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found there. Okay, then do you know bromeliads are special plants that store water in their leaves. So bromeliads are special plants that store water in their leaves. Animals like frogs use these pockets of water for laying their eggs, and जो frogs है वो वहाँ पर जाके अंडे देते हैं. bromeliads are special plants that store water in their leaves. तो ऐसे कैक्टस भी तो रखती है. तो बाय द वे ब्रोमिलियड्स भी एक नाम याद रखना कि कैक्टस के अलावा भी जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कुछ ऐसी प्लांट्स रहता है. वाटर तो इतना एबंडेंट है, फिर भी एक ऐसा प्लांट जो उनकी जो लीव्स है वहाँ पर वाटर को स्टोर करता है, तो वो हो गया आपका ब्रोमिलियड्स. ठीक है, और फ्रॉग्स आकर यहाँ पर लेइंग देयर एग्स. People of the rainforest, so people grow most of their food in small areas after clearing some trees in the forest. While men hunt and fish along the rivers, women take care of the crops. They mainly grow tapioca, pineapple, and sweet potato. As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow. They practice slash and burn agriculture. The staple food is manioc, also known as cassava, that grows under the ground like the potato. They also eat queen ants and egg sacs. Cash crops like coffee, maize, and cocoa are also grown. And the rainforest provide a lot of wood for the houses. Some families live in thatched houses shaped like beehives. There are other large apartment like houses called maloca with a steeply slanting roof. तो ये maloca क्या है? अमेजन रेन फॉरेस्ट की जो अपार्टमेंट लाइक हाउसेस है उसे हम कहते हैं मैलोका. तो ये देखो एक बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मतलब अननोन है. ठीक है, तो ये भी आपको पता चल सकता है इस एनसीईआरटी को पढ़कर. तो मैलोका जो है अपार्टमेंट लाइक हाउसेस है अमेजन रेन फॉरेस्ट में. लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग. इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रिच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर. इन 1970 द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल. सो Trans-Amazon Highway. Aircrafts and helicopters are also used for reaching various places. The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in new areas where they continued to practice their distinctive way of farming. The developmental activities are leading to the gradual destruction of the biologically diverse rainforest. It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. You can see that this destruction of forests has a much wider implication. The topsoil is washed away as the rains fall and the lush forest turns into a barren landscape, right? So you can see that this destruction of forest has much wider implication. The topsoil is washed as the rains fall and the lush forest turns into a barren landscape. Then slash and burn is a way of cultivating land where farmers clear a piece of land by slashing or cutting down trees and bushes. These are then burnt, which release the nutrients into the soil. New crops are grown in this cleared field for a few years. After repeatedly using the patch of the land, the soil loses its nutrients, so it is abandoned. Then they clear another plot of the land to plant. In the meantime, young trees grow in the old field. In this way, soil fertility is restored.
पीपल कैन देन रिटर्न टू इट एंड स्टार्ट कल्टिवेटिंग इट अगेन। तो ये हो गया आपका स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर मेथड है उसकी डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर देखो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट दिखाया गया है। अब लाइव इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र basin in the Indian subcontinent. The basin lies in the subtropical region that is situated between 10° north to 30° north latitudes. The tributaries of the river Ganga like the Ghagra, the Son, the Chambal, the Gandak, the Koshi and the tributaries of Brahmaputra drain it. Look at the atlas and find names of some tributaries of the river Brahmaputra. The plains of the Ganga and the Brahmaputra in the mountains. The mountains and the foothills of the Himalayas and the Sundarbans Delta are the main features of this basin. Oxbow lakes dot the plain area. The area is dominated by monsoon climate. The monsoon brings rains from mid-June to mid-September. Monsoon brings rains to mid-June to mid-September. These summers are hot and the winters are cool. Okay, ये तो हमारे यहाँ का जो है गेंजेटिक प्लेन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम ये देखो, तो आपको एटलस मैप देखना होगा, इस मैप पे कोई काम नहीं है, ठीक है। चलो, रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि ब्रह्मपुत्र का जो डिफरेंट नेम्स है वो कहाँ किस नाम से जानी जाती है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, फाइंड आउट द स्टेट्स इन व्हिच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज, कहाँ कहाँ लाई करता है। तो ये देख सकते हो जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, देन उत्तराखंड में है, बिहार सॉरी झारखंड में है, नहीं बिहार में है, और वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो ब्रह्मपुत्र जो है मेघालय है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है क्या, अरुणाचल प्रदेश हो क्या रहा है, मिजोरम। तो ये एक बार देख लेना, ठीक। अब द बेसिन एरिया हैज वेरीड। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक निकला यहाँ से कि ब्रह्मपुत्र रिवर का डिफरेंट नेम्स क्या है, और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, रिवर बेसिन जो है वो कौन कौन स्टेट में लाई कर रहा है। तो इसमें एक नोट बना लेना चाहिए, ठीक है। देन हम देखेंगे द बेसिन एरिया हैज वेरिड टोपोग्राफी। The environment plays a dominant role in the distribution of the population. The mountain areas with steep slopes have inhospitable terrain. Therefore, less number of people live in the mountain area of the Ganga Brahmaputra basin. The plain area provides the most suitable land for human habitation. The soil is fertile. Agriculture is the main occupation of the people. Her flat land is available to grow crops. The density of population of the plains is very high. The main crop is paddy. Since cultivation of paddy requires sufficient water, it is grown in the areas where the amount of rainfall is high. And population density definitely high होंगे, and it means the number of persons that live in 1 square kilometer of area. Example, the population density of Uttarakhand is 189, while the density of West Bengal is 1029 and that of Bihar is 1102. So wheat, maize, sorghum, gram and millets are the other crops that are grown, and cash crops like sugarcane and jute are also grown. Banana plantations are seen in some areas of the plain. In West Bengal and Assam, tea is grown in plantations. Silk is produced through the cultivation of silkworms in parts of Bihar and Assam. In the mountains and hills where the slopes are gentle, crops are grown on terraces. The vegetation cover of the area varies according to the type of landforms. In the Ganga and Brahmaputra plain, tropical deciduous trees grow along with teak, sal and people. Thick bamboo groves are common in the Brahmaputra plain. The delta area is covered with the mangrove forest. So in parts of Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh, coniferous trees like pine, deodar and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep. Terraces are built on steep slopes to create flat surfaces on which crops are grown. The slope is removed so that water does not run off rapidly. Okay, so terraces are built on steep slopes to create flat surfaces on which crops are grown, and the slope is removed so that water does not run off rapidly. In parts of Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh, coniferous trees like pine, deodar and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep.
इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आपको कॉनिफरस ट्रीज देखने को मिलेगा, जैसे कि पाइन, देवदार एंड फार। देयर इज ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन, एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर एंड monkeys are common. The one-horned rhinoceros is found in the Brahmaputra plain. In the delta area, Bengal tiger and crocodiles are found. Aquatic life abounds in the fresh river waters. The lakes of the fish are the rohu, katla and hilsa. Fish and rice is the staple diet of the people living in the area. ये देखो एक श्रृंग गंडार, ठीक है, वन हॉर्न्ड राइनोसर्स, देन क्रोकोडाइल्स, वाओ, देन ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ए केस स्टडी। ये नहीं पढ़ेंगे हम, चलो। डू यू नो टू एक्सेलरेट द एफर्ट्स टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड टू पुट फोर्स ऑन सैनिटेशन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन ऑन 2 अक्टूबर 2014। तो ये स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपका 2014 में ऑन 2 अक्टूबर। Then the Ganga Brahmaputra plain has several big towns and cities. The cities of Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna and Kolkata. इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ एंड कोलकाता, इतने सारे सिटीज टाउन है और भी है। द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs आर लोकेटेड अलोंग द रिवर गंगा। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दिस टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स, सो दिस लीड्स टू द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर्स। कितने सारे टाउन है दिख रहा है, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, सब सारे गंगा को ही दूषित कर रहा है। To conserve the river Ganga, Namami Ganga program has been initiated. So all the 4 ways of transport are well developed in the Ganga Brahmaputra basin. In the plain areas, the roadways and railways transport of the people from one place to another. The waterways is an effective means to transport, particularly along the rivers. Kolkata is an important port on the river Hooghly. The plain area also has a large number of airports. Tourism is another important activity of the basin. Taj Mahal on the banks of river Jamuna इन आगरा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ताजमहल कौन सी रिवर की किनारे पर है, तो ताजमहल जो है आपका जमुना रिवर ऑन द बैंक ऑफ रिवर जमुना। इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड जमुना। इलाहाबाद कहाँ पर स्थित है ना, गंगा एंड जमुना के कॉन्फ्लुएंस में स्थित है, मिलन स्थल में। देन बुद्धिस्ट स्तूपस इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, लखनऊ विथ इट्स इमामबाड़ा, आसाम विथ काजीरंगा एंड मानस with wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with a distinct tribal culture are some of the places worth a visit। तो ये हो गया आपका टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से क्या क्या है ना। ताजमहल है जहाँ पर ऑन द बैंक ऑफ रिवर जमुना, इलाहाबाद ऑन where गंगा एंड जमुना meets, then Buddhist stupas in Uttar Pradesh and Bihar, Lucknow with its Imambara, and Assam with Kaziranga and Manos with wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with a distinct tribal culture are some of the places worth a visit। तो ये हो गया आपका चैप्टर 6 का ख़त्म। Toucans are a type of bird definitely. Manioc is the staple food of Amazon. Kolkata is located on the river Hooghly, and Deodars and Fars are a type of coniferous trees, and Bengal tiger is found in delta area। तो बाकी क्वेश्चन सब देख लेना। चलो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में शिफ्ट करेंगे और दैट इज़ द लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 7। कितना अच्छा डिजाइन है यार, क्लास 7 का बुक है इसलिए 7 ही चैप्टर है, अच्छी बात है। चलो 7 चैप्टर में वेलकम है, लाइफ इन द डेजर्ट्स। So in chapter 5 you have seen that water means life to plants, animals and people. It is difficult for anyone to live in places where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow. So desert, it is an arid region characterized by extremely high or low temperatures and has scarce vegetation. So we will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures in some places। तो यहाँ पर डेफिनेशन आपने नोट किया क्या कि डेजर्ट जो है ये सिर्फ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम, नॉट जस्ट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बट डेजर्ट्स आर कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, जैसे कि अंटार्कटिका, इसलिए तो हमारा है हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। सो अब हम देखेंगे कि कैसे पीपल जीते हैं इस डेजर्ट में विदाउट वाटर, नॉट विदाउट वाटर बट देयर इज वेरी लेस वाटर अवेलेबल। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। Look at the Sahara Desert covering a large part of North Africa. It is the world's largest desert. It has an area of around 8.54 million square km. Do you recall that India has an area of 3.28 million square km? Right? So India से देखो
लगभग 3 टाइम्स जो है सहारा, इस सहारा का एरिया है। द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज, दीज आर अल्जीरिया, चाद, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिशनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो सहारा जो है 11 कंट्रीज में आपका जो है इसका एरिया स्प्रेड है। वो कंट्रीज क्या क्या है? अल्जीरिया, चाद, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिशानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो ये भी आपको नोट करके रखना है, और हो सके आप निमोनिक, खुद का निमोनिक बना ले सकते हैं। मेरे पास अभी कुछ निमोनिक है नहीं, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ द डेजर्ट, द पिक्चर दैट इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड इज दैट ऑफ सैंड. But besides the vast stretches of sands the Sahara Desert is covered with, there are also gravel plains and elevated plateaus with bare rocky surface. These rocky surfaces may be more than 2,500 meter high at some places. ठीक है, तो डेजर्ट मतलब सिर्फ सैंड नहीं है। सारा डेजर्ट में जो है ग्रावल प्लेन्स है, एलिवेटेड प्लेटेज है, जिसका हाइट 2,500 मीटर तक की ऊंचा है। तो ये आपको मैप में देखो, सारा डेजर्ट जो है 11 कंट्रीज के ऊपर गया है। एक तो हो गया आपका अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चाद, नाइजर, माली, मॉरिशनिया, कितना हुआ? वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा तो नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 का ही तो दिखा है यहाँ पर। बाकी आपका माली, तो माली नहीं दिखाया गया, नाइजर, चाद दिखाया गया। यस, वेस्टर्न सहारा, एंड वेस्टर्न सहारा भी एक कंट्री है। देखो, वेस्टर्न सहारा एक कंट्री है, तो इसमें भी है। तो कितना हो गया? 9 हो गया। 2 4 6 8 9 एंड 2 रह गया और भी। वो क्या क्या है? ट्यूनीशिया नहीं दिखाया गया। ट्यूनीशिया, ये वाला ट्यूनीशिया है। देखो अल्जीरिया के ऊपर जो है, तो वो ट्यूनीशिया हो गया। उसमें थोड़ा सा है, देखो। ओके, और एक कंट्री क्या है? अच्छा, माली है, तो ये तो दिखाया माली। तो और एक कंट्री क्या है? कमेंट करके बताओ। चलो हमने एक देखते तो इसके बारे में हम नोट कर लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। हम यहाँ पर सिर्फ कंटेंट स्कीमिंग कर रहा है कि क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। तो कंटेंट स्कीमिंग कर रहा है, तो इस पर नोट करेंगे कि सारा जो है 11 कंट्रीज़ में है, और वो कंट्रीज़ कौन कौन सी है। देन डू यू नो, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट present day Sahara once used to be a lush green plain. Cave paintings in Sahara deserts show that there used to be rivers with crocodiles, elephants, lions, giraffes, ostriches, sheep, cattle and goats were common animals. But the change in climate has changed it to a very hot and dry region. तो सारा जो है एक समय ऐसा नहीं था, यहाँ पर भी lush green vegetation था, बहुत सारे animals था, वही बात कर रहा है। अब हम Al Ajijia in the Sahara Desert south of Tripoli, Libya, recorded the highest temperature of 57.7 डिग्री सेल्सियस in 1922। तो हाईएस्ट टेम्परेचर आज तक की क्या है ना, 57.7 डिग्री सेल्सियस है, जो जहाँ पर अफ्रीका में सहारा में देखा गया था। कहाँ पर? अल अजीजिया में, ठीक है। अल अजीजिया जो है साउथ ऑफ ट्राइपोली, लीबिया, रिकॉर्डेड दी हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57.7 डिग्री। तो अल अजीजिया कहाँ पर है? अल अजीजिया लीबिया में है। ओके, क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ द सारा डेजर्ट इज स्कॉचिंग हॉट एंड पार्च ड्राई. इट हैज ए शॉर्ट रेनी सीजन. द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर. Here the moisture evaporates faster than it accumulates. Days are unbelievably hot. The temperature during the day may soar as high as 50 degrees Celsius and heating up the sand and bare rocks which in turn radiates heat, making everything around hot. The nights may be freezing cold with temperatures nearing 0 degrees.
Flora and fauna vegetation in the Sahara Desert includes cactus, date palms, and acacia. In some places, there are oases, green islands with date palms surrounding them. Camels, hyenas, jackals, foxes, scorpions, many varieties of snakes and lizards are the prominent animal species living there. People की बात कर लेंगे. The Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various groups of people. इतनी गर्मी में भी वो लोग रहते हैं. Who pursue different activities among them are Bedouins and Tuaregs are important. ठीक है, और भी सारे हैं. These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camels, and horses. These animals provide them with milk, hides, from which they make leather for belts, slippers, water bottles. Hair is used for mats, carpets, cloths, and blankets. They wear heavy robes as protection against dust storms and hot winds. The oasis in the Sahara Nile Valley in Egypt support settled population. And तो oasis कहाँ पर है ना, नाइल वैली के आसपास है, सहारा में भी है. And since water is available, नाइल वैली ऐसे तो रिवर है, तो since water is available the people grow date palms. Crops such as rice, wheat, barley and beans are also grown. So जहाँ पर वाटर अवेलेबल है वहाँ पर राइस भी ग्रो किया जाता है, व्हीट भी ग्रो किया जाता है, बार्ली भी ग्रो किया जाता है, बीन्स भी ग्रो किया जाता है. इजिप्शियन कॉटन इज फेमस वर्ल्ड वाइड इन इज ग्रोन इन इजिप्ट. तो इजिप्शियन कॉटन जो डेफिनेटली इजिप्ट में ग्रो करता है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है. The discovery of oil, a product in great demand throughout the world in Algeria, Libya and Egypt, is constantly transforming the Sahara Desert. तो Sahara Desert में कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पर तेल पाया गया है कि अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट में पाया गया है. अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट. अदर मिनरल्स ऑफ इंपॉर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड आयरन, फॉस्फरस, मैंगनीज एंड यूरेनियम. द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द Sahara is undergoing change and super highways crisscross the ancient camel paths. Trucks are replacing camels in the salt trade. Tuaregs are seen acting as guides to foreign tourists. More and more nomadic herdsmen are taking to city life, finding jobs in oil and gas operations. And do you know depressions are formed when the wind blows? ये डिप्रेशन वो वाली हमारी माइंड्स की स्थिति नहीं है, ये blows away by the sands. And in the depressions where underground water reaches the surface an oasis is formed. So these ideas are fertile. People may settle around these water bodies and grow date palms and other crops. Sometimes the oasis may be abnormally large. Then Tafilalet oasis in Morocco is a large oasis with an area of about 13,000 square kilometers. So this is Tafilalet oasis. सहारा डेजर्ट में आप एक ओएसिस का नाम बताना पड़ेगा, तो आपको कह सकते हो कि ताफिलालेट ओएसिस. और भी है, आप सर्च कर सकते हो. देन लद्दाख इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ला मीनिंग माउंटेन पास एंड डाक मीनिंग कंट्री. सो लद्दाख माउंटेन, ला मीन्स माउंटेन पास एंड डाक मीनिंग कंट्री. The cold desert Ladakh. Ladakh is a cold desert lying in the Great Himalayas on the eastern side of Jammu and Kashmir. The Karakoram range in the north and the Jaskar mountains in the south enclose it. Karakoram in the north and Jaskar in the south enclose it, and it is on the eastern side of Jammu and Kashmir. So several rivers flow through Ladakh, Indus being the most important among them. So Indus river flows in the Ladakh. The rivers form deep valleys and gorges. Several glaciers are found in Ladakh. For example, the Gangri glacier. The altitude in Ladakh varies from about 3,000 meters in Kargil to more than 8,000 meters in the Karakoram. Due to its high altitude, the climate is extremely cold and dry. The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely. The day temperatures in summer are just above 0 degree and the night temperatures well below minus 30 degrees Celsius. It is freezing cold in the winter, so in the temperatures may remain below minus 40 degrees Celsius for most of the time. As it lies in the rain shadow of the Himalayas, there is little rainfall, as low as 10 centimeters every year. The area experiences freezing winds and burning hot sunlight. You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time. ये क्या हो गया भाई कि द एरिया एक्सपेंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट. अच्छा, तो सनलाइट भी हॉट है और इधर से जो विंड ब्लो करती है वो बहुत ठंड है, तो इसलिए जो है आपको से साथ साथ क्या हो सकते हैं, और यू कैन सफर फ्रॉम सनस्ट्रोक एज वेल एज फ्रॉस्ट बाइट. अब यहाँ पर दो एक नया सेक्शन दिया हुआ था कि द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख. तो द्रास जो है एक कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ है
जो कि लोकेटेड इन लद्दाख। अब इस मैप में थोड़ा देख लीजिए, ये है आपका लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न साइड में है, बट यहाँ तक पूरा जाता है लद्दाख। ठीक है, मैप जो है आप यहाँ पर अच्छी चीज़ है। यूजुअली इंडस रिवर जो है फॉलो करता है यहाँ पर लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में एंटर नहीं करता है। देखो इंडस रिवर, उसकी ब्रांचेस है यहाँ पर, सॉरी जो ट्रिब्यूटरीज है वो रिवर्स है। आप देखो कि ये है जोजिला पास, ये कारगिल, ये ले, ये सायोक, देहरागोम पास, यहाँ पर है आपका सियाचिन ग्लेशियर, उधर है गिलगिट। ठीक है, अब बारालाचला पास, रोहतांग पास, ये देखो जोजिला, बारालाचला, रोहतांग पास, अच्छी बात है। चलो, देन लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापाचान व्हिच मीन्स नो लैंड। ये याद रखना कि लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापाचान मीन्स स्नो लैंड। नेक्स्ट फ्लोरा एंड फौना देख लेंगे। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स, देयर आर scanty patches of grasses and shrubs for animals to graze. Groves of willows and poplars are seen in the valleys during the summers. Fruit trees such as apples, apricots, and walnuts bloom. Several species of birds are sighted in Ladakh. Robins, red stars, Tibetan snowcock, raven, and hopi are common. Some of these are migratory birds. The animals of Ladakh are wild goats, wild sheep, elk, and special kinds of dogs. The animals are reared to provide for the milk, meat, and hides. Elk's milk is used to make cheese and butter. The hair of the sheep and goat is used to make woolens. People, do you find any resemblance between the people of Ladakh and the inhabitants of Tibet and Central Asia? The people here are either Muslims or Buddhists. In fact, several Buddhist monasteries don't dot the Ladakh landscape with their traditional gompas. So gompas क्या है? जो टिबेटन हम देख रहे थे कुछ दिन पहले, जो है द पीपल हियर आर आइदर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। तो ये जो बुद्धिस्ट मोनास्टरीज है उसे हम गोम्पास कहता है। सम फेमस मोनास्टरीज आर हेमिस, थिक्सी, से एंड लामायुरू। तो हेमिस, थिक्से एंड लामायुरू आर फेमस Buddhist monasteries or gompas. In the summer season, the people are busy cultivating barley, potatoes, peas, beans, turnip. The climate in winter months is so harsh that people keep themselves engaged in festivities and ceremonies. The women are very hardworking. They work not only in the house and fields but also manage small business and shops. Leh, the capital of Ladakh, is well connected both by road and air. The National Highway 1A connects Leh to Kashmir Valley थ्रू दी जोजिला पास। तो ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स ले टू कश्मीर वैली थ्रू दी जोजिला पास। कैन यू नेम सम मेजर पासेस इन द हिमालयज? ये भी आपको आना चाहिए। पासेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजीसी नेट में तो हर बार एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं पासेस से। अब मनाली, ये फेमस प्लेस है मनाली। मनाली ले हाईवे क्रॉसेस crosses 4 passes, that is Rohtang La, Baralachala, Lungalachala and Tanglangla। तो ये देखो, ये इम्पोर्टेंट इस सारे इन्फॉर्मेशन यूजुअली आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। द हाईवेज ओपन्स ऑनली बिटवीन, मतलब इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से आपको पता चले, उसके बाद ना सर्च करके अब आप सर्च कर सकते हो कि मनाली ले हाईवे पास कौन कौन सी जो है पासेस के थ्रू जाती है, तो आपको मिल जाएगा। रोहतांगला, बारालाचला, लांगालाचा, तंगलांगला। तो ये जो चीज़ें हैं ये कुछ नोट करने वाली चीज़ें हैं, एसएससी लाइक एग्जाम में आ सकता है ये सारी चीज़ें। द हाईवे ओपन्स ऑनली बिटवीन जुलाई एंड सितंबर व्हेन स्नो इज क्लियर्ड फ्रॉम दी रोड। तो ये जो हाईवेज है ये सिर्फ जुलाई एंड सितंबर के बीच में ही खुला रहता है। कौन सी हाईवे? जो मनाली ले हाईवे, मनाली टू ले हाईवे। Tourism is a major activity with several tourists streaming in from within India and abroad. Visits to the Gompas, treks to see the meadows and glaciers, witnessing ceremonies and festivities are important activities. Ladakh women in traditional dress, बहुत ही सुंदर है। Life of people is undergoing change due to modernization, but the people of Ladakh have over the centuries learned to live in balance and harmony with nature. Due to scarcity of resources like water and fuel, they are used with reverence and care.
नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड। ये जो लोग जो है बहुत ही डिसिप्लिन्ड है और बहुत केयरिंग है अबाउट दी मदर नेचर। ओके, सो ये हमारा जो है चैप्टर 7 ख़त्म होती है और इसी के साथ जो है हमारा क्लास 7 का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी ख़त्म होती है। और यहाँ पर कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज भी दिया गया है, तो डेफिनेटली मैं इसको एक बार जाके चेकआउट करूँगा इस वेबसाइट को। जिनको पता नहीं है, जैसे कि ब्रिटानिया का तो हमें पता है, विकिपीडिया भी पता है, नेशनल ज्योग्राफिक भी पता है, मतलब है कुछ किसके बारे में है वो हमें पता है। एंड ये स्कूल डिस्कवरी हम देखेंगे और ग्रीन पीस देखेंगे, एनिमल प्लानट ये भी डिस्कवर करेंगे और incredibleindia.org। तो ये 3-4 वेबसाइट में जाके अभी चेक करूँगा, आप भी कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।